Online students, can you hear me? What we started yesterday? रिवाइज करेंगे पहले. What we have done? Net productivity, gross productivity, right? This is what we have done. What is gross productivity? Total energy. What is net? जब respiration minus आपका net आ जाएगा. उसके अलावा what we did मतलब ग्रॉस में से रेस्पिरेशन माइनस कर देंगे तो नेट आ जाएगा ना, राइट? हाँ, बताइए. और हाँ, हाँ, secondary productivity. What is this? Primary productivity, secondary productivity. If we divide productivity, productivity has to be in two types, right? One is your primary productivity. What do you mean by primary productivity? Producers की productivity. Very good. Now, when this thing will be eaten by somebody else, तो क्या होगा? Secondary. नहीं, अभी मतलब ये तो इसकी बात कर रहे हैं, इसके अंदर ही. वो भी ठीक कह रहे हो आप, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. ठीक है, लेट्स गो इन दैट वे. ये भी सही बात है. सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है. नाउ टेल मी हाउ यू विल डिवाइड दिस ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. व्हाट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? टोटल, मतलब जितना प्रोडक्शन हुआ एनर्जी का, दैट इज टोटल. अब रेस्पिरेशन में, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में इट विल go away, so that is known as net. This is known as gross. ठीक है, so NPP, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में. What about this? Again इसमें भी ग्रॉस होगा और नेट. ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, और क्या किया था? पिरामिड्स ऑफ नंबर, राइट? वी डिड पिरामिड्स ऑफ नंबर, याद है? हाँ, मतलब टॉपिक सेम था ना, इसलिए मैं कर रही हूँ. Pyramids of number, pyramids of biomass, pyramids of energy. Can we divide all of that into parts? Can we divide all of that into many parts? What is your pyramids of number? What do you call this ecological pyramid? What is the another name for it? What is the another name for it? Very good, Eltonian. Why the word Eltonian pyramids? Because of the Charles Eltonian. Excellent, Charles Eltonian, right? अच्छा, अब पिरामिड्स ऑफ नंबर कैसे होते हैं? डिपेंड करता है कौन से इकोसिस्टम की बात हो रही है. इफ आई से पिरामिड्स ऑफ नंबर आर ऑलवेज अपराइट, दैट इज रॉन्ग. Why? Because they are upright also, they are inverted also, depending upon which ecosystem we are talking about. If I say energy, pyramid of energy is always upright, that is right or wrong? Always right, right? And if I say pyramids of biomass are always upright, that is wrong, false. Why? Because in some ecosystem they are upright, in some ecosystem they are right. ठीक है, लिखिए biodiversity. Next topic that we are going to do is biodiversity. Same है, process same है. आकृति, राशि, very good morning. Screen share. Ma'am, we have not written gross and net under secondary productivity. Same ही है. I'll make you write. अगर नहीं लिखा है तो write down the total energy. Can you see the screen now? Same है, it is same. ठीक है. What we will write in the secondary productivity? बताइए क्या लिखेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में? बताइए. Same thing. The total energy produced in the consumers is known as gross secondary productivity, and amount of energy required for their own processes will be subtracted from that.
that is, what will it become? Net. ठीक है, ठीक है. Now write down biodiversity. Biodiversity. What is biodiversity? Diversity of life, variations of life, right? That is known as biodiversity. In how many parts it is divided? कुछ explain करेंगे biodiversity real life example से? बोलिए, कुछ भी बोलिए अपना एग्जाम्पल. इकोसिस्टम अब थोड़ा सा पढ़ा है आपने. बायोडाइवर्सिटी क्या? बिल्कुल, ठीक है. सो बायोडाइवर्सिटी इज समथिंग विच इज हैविंग डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ स्पीशीज. ठीक है, जब उसको डाइवर्सिफाई, दैट इज नोन एज सिंपली बायोडाइवर्सिटी. बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशंस. ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इस वर्ड में कोई प्रॉब्लम? डेफिनेशन हम लिखेंगे, दैट विल राइट. ओके, नाउ राइट डाउन द वर्ड बायोडाइवर्सिटी is the combination of two words. The word biodiversity is the combination of two words: biological plus diversity. बायोलॉजिकल अलग लिखेंगे, डाइवर्सिटी अलग. बायोलॉजिकल प्लस डाइवर्सिटी and refers to the variety of life and refers to the variety of life on the earth, and it refers to the variety of life on the earth. Full stop. Biodiversity is the degree of variation. It is a degree of variation of life forms within a given species. Comma, ecosystem, comma, biome, ecosystem, comma, biome, or an entire planet. देखिए, अब ये biodiversity if I'm talking about, basically biodiversity can occur in three types. What are these types? Species, your ecosystem. सबसे पहले क्या आना चाहिए? Genetic. What do you mean by all these things? देखिए, जब जेनेटिक की बात करते हैं तो आपको भी पता है that all human beings are not same. We all are different. There is a genetic variation amongst all of us. That's why we look different, we behave differently, we have different characteristics, we have different talents. Why? Because genetically, although we all are from same species, what is that? Homo sapiens. We all belong to that, right? कोई और अलग? ठीक है, Homo sapiens पे belong करते हैं. So we all are what? Belonging to same species. But since still we are different. Why? There is some genetic variation amongst all of us. Height different है, character different है, talent different है, आपका behavior different है. Everything changes with the change in your genes, right? इसलिए genetic variation. Human beings में नहीं, कोई भी species ले लो, cow, your wolf, foxes,
टाइगर, सब में आपको मिलेगा, छोटे से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में मिलेगा जेनेटिक वेरिएशन। फिर हम बात करेंगे स्पीशीज वेरिएशन की। स्पीशीज मीन्स कैट्स डिफर फ्रॉम टाइगर्स, या डिफरेंट स्पीशीज में आ गए हम, राइट? तो स्पीशीज डिफरेंट, राइट? देन इकोसिस्टम्स। इकोसिस्टम्स क्या होते हैं? व्हाट आर इकोसिस्टम्स? बायोटिक एबायोटिक, इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक इज नोन एज इकोसिस्टम। बायोटिक क्या है? लिविंग। एबायोटिक क्या है? नॉन लिविंग। दोनों इंटरेक्ट करते हैं। कैन वी सर्वाइव विदाउट एयर? नो। एयर क्या है? एबायोटिक। हम क्या है? बायोटिक। जब इंटरेक्शन हुआ, इकोसिस्टम। अभी इकोसिस्टम हर जगह सेम जैसा, एक जैसा नहीं रहता, इट्स नॉट सेम ऑलवेज। व्हाई? कहीं पे डेजर्ट इकोसिस्टम है, कहीं पे अल्पाइन है, व्हेन यू आर गोइंग अबव, व्हाट डू यू कॉल दैट एज, व्हाट इज द नेम? तुंद्रा। तुंद्रा इकोसिस्टम है, ठीक है? डेजर्ट, आई विल एक्सप्लेन यू ऑल सेपरेट क्लास में, ठीक है? तो तुंद्रा इकोसिस्टम है और ये सब। तो जब इकोसिस्टम्स की बात होती है तो क्या होता है? दैट ऑल्सो डिफर, ठीक है? तो इकोसिस्टम भी डिफर करते हैं, लेकिन ये ब्रॉड लेवल पे। अब ये देख लो, इकोसिस्टम का हम जब डिफरेंस कर रहे हैं, हम स्पीशीज की बात नहीं कर रहे अब यहाँ पे, ठीक है? स्पीशीज यहाँ पे डिफरेंट होंगी, आई नो दैट। इफ आई टॉक अबाउट तुंद्रा, इफ आई टॉक अबाउट तुंद्रा और इफ आई टॉक अबाउट ट्रॉपिकल, तुंद्रा होता है ऊपर पोलार रीजन में, फॉर न्यू स्टूडेंट्स इट्स इन पोलार। ट्रॉपिकल इज your equate 0 to 23.5 north and south and both hemisphere, north hemisphere also south, ठीक है? अभी टॉपिक पे इतना स्ट्रेस नहीं मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इकोसिस्टम्स हल्का सा टच कर दिया था इसलिए, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट यहाँ पे, इतना एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, इकोसिस्टम का काम नहीं है, ठीक है? तो कितने टाइप की वेरिएशन है? 3 टाइप्स की, जेनेटिक, स्पीशीज एंड इकोसिस्टम। किसी को ये बात कोई प्रॉब्लम समझने में? सबसे स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ वेरिएशन, माइन्यूट लेवल ऑफ वेरिएशन कौन सा है इसमें? जेनेटिक, फिर स्पीशीज, फिर इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज द ब्रॉडेस्ट लेवल, ठीक है? एनी डाउट्स? ठीक है। अच्छा, इसमें वेरिएशन प्लांट्स का भी आएगा, सिर्फ मैमल्स का नहीं, ठीक है ना? इफ यू हैव दैट व्यू पॉइंट कि सिर्फ मैमल्स का आ रहा है, स्पीशीज नहीं, बिकॉज दे आर ऑल्सो लिविंग बींग्स, ठीक है? वो भी लिविंग बींग्स है, तो वहां पे जेनेटिक वेरिएशन उनका भी होगा, राइट? नाउ राइट डाउन। Biodiversity is a measure of, biodiversity is a measure of health of the ecosystem. Biodiversity is the measure of, Ragini Jagi, do we have only one class in a day? Yes, Ragini, एक ही क्लास होता है ना आपका? इकोनॉमिक्स की है आपकी? नहीं है, हाँ। यस रागिनी, यू हैव ओनली माइंड क्लास, माई क्लास टुडे, है ना? राइट, ओके, ठीक है? So write down, biodiversity is a measure of the health of the ecosystem. Write down, the term diversity, the term diversity was used first by wildlife scientists and conservationists. Spelling is this. Wildlife scientist and conservationist. Raymond F. Desmond. Raymond F. In the 1968, in the 1968, the term contracted from, the term contracted form, contracted means इसको कंसाइज कर दिया गया, सिर्फ बायोडाइवर्सिटी बोला गया, the term in a contracted form,
in a contracted form was coined by was coined by W.J. Rawson. W.J. Rawson in 1985. अच्छा, W.G. Rawson. Who is having Himachal special? Sorry, Himachal PCS. यहाँ पे कोई है हिमाचल का? Ma'am, I have. अच्छा, what is your name? Shalini. Shalini. Write down W.G. Rawson in 1985. Now write down biodiversity is usually considered. Biodiversity is usually considered at three different levels. At three different levels. The following are the types of biodiversity. First is genetic diversity. Genetic diversity. Now everybody please tell me the kind of mutation that we do by human intervention. What I'm talking about? Mutation. How many of you know what is mutation is? Mutation means, literal means change. Change in what? DNA, right? You change DNA, why? Because you want to bring the changes in the characteristics of a species, right? It can be plants also, like we are working on the mustard ka variation. Why? Because we want to make it more productive. ठीक है, BT cotton, right? ठीक है, so genetic variations हम क्यों करते हैं? So this is what we do deliberately. वो भी genetic variation में ही आएगा, right? But this is artificial. Artificial means we are doing it. It is not happening on its own. कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? What is mutation? समझ में किसको नहीं आ रहा है या आ रहा है? Please बताओ. Because this is little scientific topic, थोड़ा सा साइंस इसमें इन्वॉल्व है. और किसी को ये डाउट है कि जो हम वेरिएशंस खुद करते हैं इन एक्सपेरिमेंट वी डू इट इन लैब्स टू मेक समथिंग बेटर. अभी किस पे काम चल रहा था? मस्टर्ड पे, राइट? बिकॉज वी वांटेड टू मेक इट मोर प्रोडक्टिव. उसके ड्रॉबैक्स निकल जाते हैं. जेनेटिक वेरिएशन से क्या करते हैं हम लोग? म्यूटेशन करते हैं, उसके ड्रॉबैक्स निकाल देते हैं बिकॉज वी वांट टू मेक इट मोर प्रोडक्टिव. अब ड्रॉबैक्स निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? बेटर हो जाएगा. बट डू यू थिंक द प्रोसेस इज सो सिंपल? क्यों? हाँ, प्रोसेस इतना सिंपल क्यों नहीं है? हाँ, ये भी आपके मेंस में आ सकता है. ऑल्दो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. एनवायरमेंट और साइंस का कॉम्बिनेशन है. ये साइंस एंड टेक में आता है बेसिकली, राइट? बट इट्स ऑल्सो कवरिंग अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंट का अंडरस्टैंडिंग. कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहाँ पे दोनों का आपको इंफॉर्मेशन क्यूमुलेटिवली चाहिए, राइट? अब मुझे आप ये बताइए कि व्हाई इट इज वेरी वेरी डेंजरस टू हैव दिस. डेंजरस है ना, मतलब व्हाई इट्स अप्रूवल के लिए आपको क्यों चाहिए होता है? व्हाई देयर इज stringent laws in different countries as well as in India? हाँ, राइट. व्हाट डू यू कॉल दैट एज? क्लोनिंग? I cannot say. There are terms for it. Yes, it is cloning. Then yes. क्यों करते हैं हम लोग? मतलब क्यों इसका लॉज है? Why? मिसयूज. एक्सीलेंट. मिसयूज होगा. और मिसयूज होगा बिकॉज समथिंग विच इज वेरी वेरी सेंसिटिव लाइक मस्टर्ड, अगर उसमें people starting having their own autonomy and people are consuming it, that can create a huge repercussions because we humans are consuming it, other animals are consuming it maybe for their dependency, right?
जिसकी क्रॉप्स हैं वहां पे भी तो देयर आर मेनी पेस्ट व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन दैट. Okay, so misuse will start happening. So therefore, they have to go with a certain round of approval. Who is that institution in India who approves? GEAC. फुल फॉर्म देख लीजिए आप. ठीक है. So that is the institution which is there. क्या करता है वो? अप्रूव. और ऐसे आसानी से अप्रूव नहीं होता है. राइट. अभी तक किसका अप्रूव हुआ है? बीटी कॉटन का. राइट. कौन से ईयर में? कौन से ईयर में अप्रूव हुआ है? Back in I think 2002. I'm not remembering the year very clearly. So that is what. So आपको approval चाहिए होता है. Okay. Even in if you're exporting something also, then that all people are also taking care. Does it have the genetic variations or not? जब आप कोई भी चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं इन डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन, अभी तो इट्स बिकमिंग डिफिकल्ट. अभी तो टैरिफ वॉर चल रहे हैं. राइट. सो अभी तो देयर इज अ डिफरेंट जियोपॉलिटिक्स हैपनिंग. राइट. बट people are very very cautious, especially European countries and your Western nations, all of the Western nations. कितने लोगों को ये बात समझ में आई? थोड़ा सा रिसर्च करना. So just study, you will have more understanding of the topic. ठीक है. Just go back and study about more genetic variation, BT cotton, your mustards, variations in mustards, ये सब. ठीक है. अगर आसानी से अप्रूवल मिल गया तो क्या होगा? पीपल विल स्टार्ट misuse. So misuse जैसे उन्होंने बोला that they will start telling we want this kind of baby. उसका green eyes होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए. The brain should be like Elon Musk, right? You should be as powerful as Narendra Modi. Okay, so इस तरह से आपके variations उसके आप characters डालने लगेंगे कि ऐसा मुझे ये चाहिए वो चाहिए. And people who are very powerful, they start doing it, misusing it. Powerful I mean they can afford it. और इससे क्या हो जाएगा? Separation between humans, superiors, inferiors, superior race, inferior race. And do you think it is ethically right? Not at all. ठीक है. Not at all ethically right. क्या कह रहे हो आप? अच्छा, नहीं मैंने सुना नहीं. ओके. नो. ठीक है. थोड़ा करंट से मिलाकर आप पढ़ेंगे तो टॉपिक्स और इंटरेस्टिंग बनेंगे. ठीक है. यू कैन राइट दीज एग्जाम्पल्स ऑल्सो. ओके. नाउ राइट डाउन. वेराइटी इन द जेनेटिक मेकअप. जेनेटिक डाइवर्सिटी में लिखेंगे वेराइटी इन द जेनेटिक मेकअप among individuals okay variety in the genetic makeup among individuals within a species. genetic makeup को underline करेंगे. Now write down next point. Did you miss something? Individuals within a species. फिर next point लिखेंगे species diversity. Variety among the species. Variety among the species or distinct types of living organisms found in different habitats. मैम ये वाला रिपीट कर दीजिए. स्पीशीज डाइवर्सिटी का वैरायटी अमंग द स्पीशीज, उसके बाद Variety among the species or distinct types
of living organisms found in different habitats, found in different habitats of the planet. Right? Guide on ecosystem or ecological diversity. Ecosystem or ecological diversity. Variety of forests. Variety of forest, comma, deserts. Variety of forest, comma, deserts, comma, grasslands, comma, streams, comma, streams, comma, lakes, comma, oceans, comma, coral reefs, comma, wetlands, and other biological communities. Other biological communities. That's it. Now write down this. Look at the topic. Ma'am, can you repeat this topic, this point? Yes. Ecosystem diversity, variety of forest, comma, deserts, comma, grasslands, comma, streams, comma, lakes, comma, oceans, comma, coral reefs, comma, wetlands, and other biological communities. अब इसमें कोई भी Ma'am, डाउट है यहाँ what would you say after grassland? क्या है grasslands की? Streams. STREAMS. Just take 2 minutes and revise. And if you have any doubt, let me know. कब कौन सा टारगेट कर रहे हैं हम? नेक्स्ट ईयर टारगेट कर रहे हैं यूपीपीसीएस, नॉट दिस वन, अक्टूबर वाला. हाउ मेनी टारगेटिंग अक्टूबर वन? यूपीपीसीएस अक्टूबर अभी है ना. बीपीएससी आई थिंक तो ऑल्सो देयर. क्या हुआ? हाँ, आप क्या टारगेट कर रहे हैं? नहीं, टारगेट क्या कर रहे हैं? बीपी ना.
क्लियर एवरीथिंग? आपको क्लियर होगी? नाउ राइट डाउन वैल्यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी. वैल्यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये टॉपिक प्योरली मेंस के पर्सपेक्टिव से है. प्रीलिम्स में ऐसा टॉपिक नहीं पूछा जाता वैल्यूज, पर डायरेक्ट क्वेश्चन मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वैल्यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है? वैल्यूज, consumption values, we consume something from like our plants, right? Then other pests are present, they are dependent on them. What is the other thing? Aesthetically they are good to see. Medicines, very good. Medicines के लिए aesthetically they are good to see. What else? Value addition, like teak, timber, we use it in our as a furniture, right? We use it in our furniture. It is also having what? Utility. Consumption एक food के purpose से है, एक आपका to have your basic utilities, you are using that. उसके अलावा very good religious and cultural values भी हैं, जैसे sacred groves, right? We are dependent, we keep on protecting that area as well, right? So write down the value of biodiversity. It's easy topic, बस लिखना है इसके अंदर. और डायरेक्टली जब आपका क्वेश्चन आएगा मेंस में, आपको डायरेक्टली यहीं से उठा के you have to write the answer. Write down value of biodiversity in the terms of its commercial, in the terms of its commercial, social, in the terms of its commercial, comma, social and aesthetic values, and aesthetic values is enormous, is enormous. There are several ways that biodiversity and various forms, there are several ways in which biodiversity and its various forms are valuable to. मैम ये रिपीट कर दीजिए. देयर आर सेवरल वेज. There are several ways that biodiversity and its various forms are valuable to humans. Full stop. The biodiversity value may be classified as follows. The biodiversity values may be classified as follows. The first point is consumptive value. Have you missed something? Have you missed something? Consumptive value. First is consumption. Consumptive value. Consumptive value. Biodiversity is an essential requirement. Consumptive value में लिखेंगे biodiversity is an essential requirement for the maintenance of global food supply. For the maintenance of global food supply. Full stop. The main sources of human food, the main sources of human food include animals, comma, fish, animals, comma, fish. मैम थोड़ा धीरे धीरे. द मेन सोर्स ऑफ. मैं बहुत main source of human food. Main source of human food include animals, comma, fish, and
plant species and plant species. Clear? First up, a large number of plants are consumed by humans. A large number of plants are consumed by humans as food. As food. First up, a few animal species are consumed by people. Few animal species are consumed by people which come from cattle, comma, pigs, comma, sheep, Ma'am, what is after kettle? pigs, 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 comma, Ma'am, can sheep, you please repeat this line, ma'am? By people which comes from come from cattle, cattle, comma, pigs, comma, sheep, sheep, comma, goats, comma, buffaloes, buffaloes, comma, chickens, etc. They are also part of the class, no? They they are also part of the class. All right. Next, write down drugs and medicines. इसी के अंदर लिखिए drugs and medicines. इसी के अंदर drugs and medicines. About 75% of world's population, about 75% of world's population depend upon plants and plants extracts, plants and plants extracts for medicines, for medicine. The drug penicillin, the drug penicillin used as an antibiotic is derived from a fungus called penicillium, is derived from the fungus called penicillium. Likewise, tetracycline, ये आपका पूछा जाता है प्रीलिम्स में, दिस पार्ट बहुत बार. The penicillin is derived from what? Fungus, protozoa, bacteria, like that. Name नहीं देंगे penicillium because बहुत obvious है name, but they will give the variety कि क्या है penicillium. Is it a fungus? It is a bacteria? It is a protozoa or any other algae, right? So what is that? So then they will ask you. ठीक है? So it's a fungus. Next write down. Likewise, tetracycline. Tetracycline, which is what? Write down tetracycline from bacteria. This is the name of the medicine. From bacteria
which is used to cure malaria is obtained from the bark of cinchona tree. Is obtained from the bark of cinchona tree. कौन से ट्री से लेते हैं? cinchona tree से. ठीक है. Next, write down fuel. Fuel. Next, write down fuel. The fossil fuels like coal, petroleum products and natural gas are the products of biodiversity. मैम प्लीज रिपीट कर दो. Okay, fossil fuels like coal, petroleum products and natural gas are the products of biodiversity. Any other example that we can add in it? एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं इसमें प्रोडक्टिव वैल्यू में, सॉरी व्हाट डू कॉल कंजम्पशन वैल्यू में. कंजम्पटिव वैल्यू में कुछ और ऐड कर सकते हैं हम लोग. बताइए. एग्जाम्पल से ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है ना करंट अफेयर्स से. हाँ हाँ बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा. जैसे क्लोथिंग आप किससे लेते हैं? जूट से. वेरी गुड, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. और जूट की इंडस्ट्री कितनी ज्यादा बढ़ रही है. लेदर इज फ्रॉम एनिमल्स, सिल्क इज फ्रॉम सेरिकल्चर, राइट. हैव यू सीन दैट सेरिकल्चर? कभी देखा है? कैसा दिखता है? ये छोटे जो वॉर्म्स होते हैं, राइट. और अच्छे एग्जाम्पल सही है. जूट, जूट की इंडस्ट्री इज प्रोलिफरेटिंग लाइक एनीथिंग, राइट. एंड पीपल आर यूजिंग इट अलॉट. थोड़ा सा चीपर भी होते हैं, बेटर भी. दे आर व्हाट डू यू कॉल देम एज, आई थिंक sturdy, I don't know what is the right word. So they are actually very hard from outside, and it's the longevity, the lifespan of that is very. Handicrafts, yes, definitely. Your bamboo, your materials made from bamboos, right? जो करंट अफेयर्स में आप इसको ऐड भी कर सकते. जैसे अगर मीन्स का आंसर लिख रहे हैं, देन यू कैन ऐड दिस पॉइंट्स. एथेनॉल क्यों? हाँ, तो व्हाट इज दैट? किस किस पॉलिसी में आता है वो? सही बोल रहे हो, बट अभी हाफ नॉलेज है इसके बारे में. व्हाट इज दैट मैंडेट? कौन सी पॉलिसी के अंदर आता है? हाँ, yes, E20. What is the full form? National Biofuel Policy. Just read about this. Current affairs का part है, ठीक है. Just to make your answers more better. Means के आंसर जब आप लिखेंगे. National Biofuel Policy. What does it say? What this National Biofuel Policy says? That you have to add what? 20% of ethanol. किसमें? पेट्रोल में. क्यों? एमिशंस को कम करने के लिए, ठीक है. सो कहाँ से लाएंगे, क्या ऐड करेंगे? व्हाट इज हाउ यू गेट द एथेनॉल्स? शुगर केन. शुगर केन का क्या? मोलासेस. यू विल यूज मोलासेस एंड देन यू विल ऐड इट. उसके भी टाइप होते हैं, बी सी, राइट, दैट यू हैव टू गो थ्रू. इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बी सी वेरिएशन में जाना, बट यू हैव टू नो दैट व्हाट इज नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, राइट. इससे आपके एमिशंस कम होंगे. Okay, simplistic way में I am explaining you. There is much more than this. ठीक है, you can add
विद रिस्पेक्ट टू द बायोफ्यूल आप स्कीम्स ऐड कर सकते हो, जैसे पॉलिसीज ऐड कर सकते हो. तो दिस विल मेक योर आंसर डिफरेंट, क्योंकि मार्क्स किसके मिलेंगे मेंस में, प्रीलिम्स के बाद मेंस में तो लिखना है ना, राइट. तो इसके लिए यू हैव टू प्रिपेयर अभी से. यू कैन नॉट हैव स्टार्ट योर प्रिपरेशन ऑन द एज कि नहीं चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं, 2 months का टाइम है, वी शुड ऑल्सो प्रैक्टिस मेंस. यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे. ठीक है, तो क्वेश्चन देखेंगे एंड देन यू विल राइट. अब इसी में करंट अफेयर्स कैसे अमेलगेमेट करने, कैसे आपको इंक्लूड करने हैं थ्रू करंट अफेयर्स. जैसे नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी हो गया, आपने बताया बैम्बू का, बैम्बू की जो स्कीम्स आ रही हैं, मे बी दैट मस्ट बी इंक्लूडेड इन एनी बजट, या फिर किसमें इंक्लूड होगा, किसी स्कीम में, so that you can add, right? Anything else you can add in this? और क्या ऐड कर सकते हैं? हाँ बट ठीक है, एक प्रोडक्ट ही है. यस, एक प्रोडक्ट है. यस, फ्रॉम द ग्रेप्स यू क्रिएट. यस यस, फर्मेंटेशन से आप बनाते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो. है तो कंजम्पशन ही, यू आर कंज्यूमिंग इट, राइट. लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और कौन सी मटेरियल? हाँ बिल्कुल, रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं. और बिल्कुल सर. हाँ, पेपर, कुछ ऐसा बताओ जो जिसमें स्कीम्स भी इन्वॉल्व है, जिसको गवर्नमेंट बहुत पुश कर रही है. जैसे उन्होंने जूट बताया, बैम्बू बताया, गवर्नमेंट इज पुशिंग लाइक एनीथिंग. उस तरह से कुछ बताओ जिसमें स्कीम्स आपकी ऐड हो सके. रोहित, क्या बताओ. हाइड्रो एनर्जी, अच्छा. पर वो उसमें हम हाँ वाटर यूज कर रहे हैं फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज फाइन. कौन सी एनर्जी बोलते हैं उसको, एक और नाम है इसका, ग्रीन. मैम ई व्हीकल्स. हाँ ई व्हीकल्स, ई व्हीकल्स, हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. वो एक अलग चीज हो गया. यहाँ हम बात कर रहे हैं कि हम एनवायरमेंट से क्या क्या यूटिलिटी कर सकते हैं, क्या क्या कंजम्पशन वैल्यूज है हमारी, और क्या क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स है इन ऑर्डर टू प्रमोट द कंजम्पशन फ्रॉम द एनवायरमेंट, राइट. वाटर से क्या मिलेगा, ग्रीन एनर्जी बोलते हैं उसको. ठीक है, सोलर, हाँ सोलर भी लिख सकते हैं, बट हाँ है तो बायोडाइवर्सिटी का पार्ट, डाइवर्सिटी, बट बायो, बायो समथिंग इज लिविंग. नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी होगा, बायो यूजिंग ऑफ शुगर केन, लिविंग. मैम हाइड्रोजन फ्यूल हो सकता है क्या? हाइड्रोजन फ्यूल भी तो एग्जांपल, हाइड्रोजन फ्यूल भी तो एग्जांपल हो सकता है. हाँ, हाइड्रोजन फ्यूल इसमें नहीं होगा, रीजन बीइंग क्योंकि यू आर नॉट यूजिंग एनीथिंग व्हिच इज कंज्यूम्ड फ्रॉम द बायोडाइवर्सिटी, राइट. बायो, बायो वर्ड है, प्लीज रिमेंबर, लिविंग. ठीक है, ओके. नाउ राइट डाउन प्रोडक्टिव वैल्यू. प्रोडक्टिव वैल्यू हेडिंग डालेंगे, प्रोडक्टिव इसी के अंदर. प्रोडक्टिव वैल्यू, some of the organisms लिखिए, some of the organisms are commercially usable where the product is marketed. Some of the organisms are commercially usable where the product is marketed and sold. Full stop. The animal products like tusk of elephant, comma, musk from deer, tusk from elephant, musk from deer, comma,
silk from silkworm, silk from silkworm, comma, Ma'am, tusk. tusk of elephants, musk from deer, comma, silk from silkworm, silk from silkworm, Ma'am, what is after the animal product like tusk of elephants, TUSKS, tusk of elephants, comma, musk from deer, MUSK, musk from deer, silk from silkworm, comma, wool from ships, and fur from many animals, and fur from many animals. All are traded in the market. Right? Write down. Caliber beans. Ma'am, C all are traded. all are All are traded traded. in the market. Write down. Caliber bean. Caliber bean was traditionally used as poison. Ma'am, which is used for poison? ये रहने दो. Leave it. आगे लिखो. Daisy plants. Daisy plants were first used as lice remedy. LICE, lice remedy in Middle East. Then discovery of pyrethrum, PYRETHUM, pyrethrum, actually it is RUM, pyrethrum, क्या लिखा आपने इसमें? Discovery of pyrethrum was used in making mosquito coils. Right? Your BT, write down the bacteria Bacillus thuringiensis. बैक्टीरियम, यही बीटी कॉटन की बात कर रही थी मैं. बैक्टीरिया आगे लिखेंगे बैसिलस. बैक्टीरिया के आगे लिखेंगे बैसिलस. आई एम टेलिंग द स्पेलिंग. BACILLUS, BACILLUS, Bacillus thuringiensis. THURING, THURING, आगे लिखेंगे IENSIS. बैक्टीरिया का नेम है. Produces toxic proteins that kill certain insects. Produces toxic proteins that kill certain insects. Now write down the next, social value. Social value. ये तो सब समझ में आ गया. नेम है सिर्फ.
बीटी कॉटन की जब हम बात कर रहे थे, दिस इज बैसिलस thuringiensis, फुल फॉर्म है इसका, राइट. Perithrum is used for making mosquito coils to kill insects. You know the mosquito coils used in every house. Then what else? Another example I have given, that is also from the consumption perspective. अब लिखेंगे social value. Social value. Social values. Write down. These are the values associated with. These are the values associated with social life, comma religion, social life, comma religion, and spiritual aspects of the people. And spiritual aspects of the people. Full stop. Many of the plants are considered. Many of the plants are considered sacred. Many of the plants are considered sacred in our country, like tulsi leaves, like tulsi leaves, comma, banana leaves, and mango leaves, and mango leaves. Full stop. Many animals like cow, comma, snake, comma, peacock also have significant place, also have significant place in spiritual, in spiritual and thus hold special importance, and thus hold special importance. Now write down the next value of it. It is ethical value. Write down ethical value. Write down ethical value. और कोई एग्जाम्पल ऐड करना चाहते हो सोशल वैल्यूज में? Start interacting in the class, otherwise it will become a monologue from my side. सोचो थोड़ा क्या हो सकता है और क्या सोशल वैल्यू. बताइए सोशल वैल्यू और क्या हो सकता है. कोई बात नहीं, आप बोलिए, बताइए, एग्जाम्पल दीजिए, बताइए. सोशल वैल्यू ऐड करो. हाँ, नीम. हाँ, नीम भी यहाँ वर्शिप करते हैं, कहीं कहीं करते हैं डेफिनेटली. ट्राइबल पीपल आर, दे आर वर्शिपिंग एनीथिंग. मैम वाटर इंक्लूड होगा? नहीं. बताओ. People. हाँ, राइट. नीम पीपल, यू डू वर्शिप दैट. हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू, वी वर्शिप ऑल. तो करंट अफेयर्स थोड़ा ऐड करना स्टार्ट करिए गाइस. उससे क्या होगा आपका, दिस कौन सा न्यूज़पेपर आर यू रीडिंग दीस डेज? पढ़ रहे हैं, इसमें ऐड करिए ना, एडिशन करिए कुछ नए रियल लाइफ एग्जांपल्स जो करंटली चल रहे हैं. दिस मेक्स द मेंस आंसर राइटिंग वेरी इंटरेस्टिंग और क्लास आल्सो इंटरेस्टिंग. ठीक है.
तो ये सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं. So you can figure out there is a place in Kerala. In Kerala, you are having very sacred groups. Sacred groups का example आप इसमें लिख सकते हैं. What kind of importance that sacred groups hold for the people who are in Kerala and also in Meghalaya. Karnataka also, yes, excellent. Karnataka maybe. There are people who are keeping that as they do not want them to touch. They literally make the trees and everything like sleep on time, wake up on time, like that. So that holds a huge importance. And then don't let other people intervene in their area. Okay, so this can one of the examples is one of the basic example that you can add. Or any incident related to sacred groups, you can also add that. कुछ भी recently हुआ हो sacred groups में, then you can add those examples as well. Right. Next, you can write down social values. Sorry, ethical value. Write down. Ethical value means human beings may and may not use a certain species. Human beings may or may not use certain species, but knowing the very fact that existence of the species in nature gives pleasure. Full stop. अब इसमें क्या ऐड करेंगे आप? Recent examples में जो currently हो रहा है इंडिया में, stray dogs, right? You can add those things that because of the recent judgment by one of the court, the verdict came that the stray dogs has to be moved to a shelter. And how many of you're favoring the court versus you're favoring the dog lovers? ये रो dog lovers. बताइए, क्लास में तो डिस्कस कर सकते हैं. See, everything has a different viewpoint. I'm just taking the perspective only from your side, that it's not that what is right, what is wrong. Obviously, we'll do that later on, because some people are moving by their sentiments. That is also fine. And some people who have got this, like I mean, some people who have had the brunt of it, they are moving from their perspective. So both the perspective having their own points. So you are lying in which category? आप न्यूट्रल में है सारे, ऑल ऑफ यू, मतलब आप अच्छा आप न्यूट्रल. ओके ठीक है. आप लोग न्यूट्रल और डॉग लवर्स बताइए. हाँ, रहना चाहिए. See, if you're moving them, then you should have shelters, because they are also living beings, right? They are also living beings. If you give somebody a proper food, proper shelter, proper amenities, then that's fine. But if that is not provided, then obviously it raises a question among people also. It also shows how people are caring about not only for themselves. We have said that humans are a very self-centered species, right? But these incidents shows that no, humans also take care. They also have a soft corner for the people who are living around them, whether it's dogs, whether it's other human beings. So we do have, right? The way they have come out as a community to save dogs is also a good sight to see. Although there are some other viewpoints also, I'm not denying that, right? People who have had a brunt of it, they are having a different viewpoint. So you can't say they are completely right and they are completely wrong. ठीक है? So you can add this point also. उसके अलावा और क्या ऐड करेंगे?
एथिकल वैल्यूज में? साइबेरियन बर्ड्स, उसमें क्या हो रहा है? कम हो रहे हैं, ठीक है। रीसेंट वर्डिक्ट बताइए आप, जैसे कुछ लिया हो, फिर ह्यूमन बींग्स मस्ट हैव टेकन ethical, or maybe the court must have taken an ethical stand that this, क्या हुआ था? हाँ हाँ, क्या हुआ था वहाँ पे? हाँ, ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं। वेरी गुड। तेलंगाना में जो फॉरेस्ट काटा था, व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द वर्डिक्ट? हाँ, कब हुआ था? एट व्हाट टाइम? रिसेंटली हुआ था। सो व्हाट द कोर्ट सेड? दैट इज इम्पोर्टेंट। हैदराबाद में क्या हुआ था? और सेम थिंग दे आर टॉकिंग, आई गेस सेम प्लेस की बात कर रहे हो आप लोग, ठीक है। Ma'am, cow says Cows, yes. What is the recent incident which has happened related to cows? ठीक है, लिखिए। अच्छा, एथिकल वैल्यू के अलावा और क्या ऐड कर रहे हैं ये लोग? So you have many examples now. Stray dogs, example one is your Telangana forest जो recent cut हुआ था. Then what is another example that we added? Pigeons example in Mumbai, in Maharashtra, right? So that is what. So mass killing of animals is not ethical, right? Although in some cases people have done that. A lot of I think states have done that. They have taken that steps, but that is not right. Prima facie. Yes, UP Nilgate, right. That has happened. Very good. ठीक है, ऐसे एग्जांपल्स लिखने हैं एथिकल वैल्यूज में, ठीक है। Cairo जॉर्ज, and Bihar. okay, in Bihar also. Okay, now write down the last point, aesthetic value. Aesthetic value. Write down. Every one of us would like to visit vast stretches. Every one of us would like to visit vast stretches of land to enjoy the visible life. To enjoy the visible life. Full stop. People from farther areas, people from farther areas to visit vast stretches of land to enjoy the visible life. To enjoy the visible life. Full stop. People from farther areas, FARTHER, farther areas, comma, spend a lot of time and money, spend a lot of time and money to visit wildlife areas where they can enjoy aesthetic, to visit wildlife areas where they can enjoy the aesthetic value of biodiversity, where they can enjoy aesthetic value of biodiversity. And this type of tourism is known as eco-tourism. And this type of tourism is known as eco-tourism.
Ecotourism, next line, ecotourism is estimated to generate 12 billion. Ecosystem is estimated to generate $12 billion of revenue annually. $12 billion of revenue annually. That roughly gives the aesthetic value of biodiversity. Aesthetic value of biodiversity. Next line. A study of impact of environment on the psyche. On the psyche. Ma'am, on the क्या? Psyche. P-S-Y-C-H-E. Psyche. P is silent. Psyche was undertaken by Ma'am, please Kaplan. repeat this line. Sorry. On the psyche was undertaken by Kaplan. Ma'am, from this. I'm repeating again. A study of impact of environment on the psyche was undertaken by Kaplan. ब्रैकेट में लिखेंगे 1989, in which they found that being near nature relieved working stress. Relieved working stress. While people who worked in closed environment, experienced much more illness. So who has given this? Kaplan. Kaplan in 19. We'll discuss about Kaplan tomorrow, right? 1989 he did an experiment and he said that people who are working and who are going to the nature oftenly, right, after their work also, they are able to manage the stress. This has been given by Kaplan. We will discuss what else he has said and what discovery he has done. What is ecotourism? Right, national parks, wildlife sanctuaries. Safari. Yes, safari, सब कुछ तो इसी में ही आएगा. Your gym corbettes, right? So which is there. In India, mein you have this. Outside, you also go to different zoos. If you go to Thailand, Bali, etc., वहाँ पे आपको you have जो आपको ऐसे they'll put reptiles on your hands, right? And you have to feel, etc. Whatever. People who are okay with that, they can do that, right? India maybe it is there in some places, but वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही इसको promote किया जाता है. ठीक है? All right. Anything else? Thank you so much, class.